मुआयना कर रहे हैं कहाँ पे शॉट मारना है, सब गैप्स वगैरह देख रहे हैं. First over is about to begin. Subodh begins the proceedings and the match is on. All right, then it's A factor at the moment for Red Rangers. Amber, Amit. Hello. Amit at the non-strikers and Amber ready to face Subodh. Right arm round the sticks to the right hander. Good hit. Oh, that's a good shot. He has already started. He has already made his intentions clear. Amber. Into the hands of Logo. He's in red hot form. The skipper, Amber. We got to see a glimpse of what he can do in the very first match. You must say that, Royal Riders are Good hit. playing Oh, it's back a to catch. It's oh, a that's fantastic a catch. really great It's a effort. drop. It's It's a a drop. great effort. It's a great It's a drop. great effort. Oh, he was in complete control until his elbow thudded to the ground and the ball spills out of his palm and batsman gets a reprieve. Arun feels the pinch of dropping that most important first wicket. Just on the Right. second ball. It almost felt as if he had caught the ball, but unfortunately, unfortunate for Red Rangers, he survives. Amit. As many as 5 fielders can be seen protecting the onside, 2 fielders inside the circles. Long on, mid-wicket, deep square leg and short mid-wicket and fine leg. 2 fielders inside the circle, 4 fielders protecting the offside. Logo can be seen at mid-off, and then we have deep cover, short cover, deep point rather, and 1 at third man. One more. Oh, that's an agricultural shot attempted by the captain himself, So- Amber. After 4 balls, 4 runs on the board. 3 runs? 3 for no wicket. It has been quite a good start this from Subodh Joshi. That's a Wonderful. great shot. And there's a shout for catch, but not possible. So only single conceded. He's a strong and tall lad, Amit. Using the long lever, long handle of the bat. He can hit the ball long way into the stands. Oh, And wow. Amber wanted to go downtown, misses it completely, only to connect with the thin air. A dot ball to finish off, and of a wonderful spell by Subodh Joshi. We can get to see him again in this inning when he come out to bowl the second over for himself. At the moment, score is 4 without losing wicket. Four runs is what they could manage Red Rangers in the first over. I think that is just the start. Let's see the charisma of Red Rangers in the coming overs. So the fresh over is about to start, the second over of the second And the match. captain himself, Nitin, brings himself into the attack, seeing the opponent captain at the non-strikers end at the moment. Ball to Amit. Oh, wow. Oh, that's a good ball by Nitin. The first over has been pretty silent. Red Rangers have been content, only 4. And Royal Riders have seemed to find their nick. Well, at the moment, Considering the 7 overs match, I think they can't afford to run that slowly with a slow pace. They have to immediately change Big the hit gears. from That's Amit. a big hit and It's a Loku's catch, after catch, it and catch. he's out. Yes,
That's the first wicket for Red Rangers. Logu Amit does the tried trick. to hit him out of the ground and is caught. Logu does the trick. Logu Logu has, is again, you has can't again- keep Logu out of the game for a long. He will produce either the wicket or catch. Coming into bat, the Here next comes player Shubham is Shubham back. Gade, who was the star player in the last match, as you would remember. So after 1.2 overs, 4 for 1. Red Rangers in some sort of trouble now. They will have to keep the scoreboard ticking. With the fall of Amit's wicket, they will have to strategize. Amber and Shubham having a small discussion on the center pitch. Shubham to take strike on Nitin's third delivery of the second over. Red Rangers very well know what happened to Blue Warriors, so they don't want to get into shell that way. Third ball. So third ball is about to be bowled. Hit on the ground. Well, this is what you can get to see when Shubham is there. He'll keep the scoreboard moving and ticking. Doesn't like to waste the deliveries. Doesn't like to play many dot balls. And this is the beauty of these two batters out in the middle from Red Rangers. A lot will be relying on their shoulder. How well they pace their innings. The problem is once in a while the dot ball keeps coming, and singles and doubles are not going to help Red Rangers now. Surprisingly, Amber is struggling in this inning. Yes, you're right, Sunil. Amber seems to be struggling to get his original form, but I'm sure he will pick it up. That's a lovely Big stroke hit. by Amber. Big head. That Six. should. Six. That is That's That's a six. Huge That's six by Amber for you. Well, that will ease his nerves a bit. Yes, That yes. will That help will- him, and not only That him, will boost but his the team. confidence. अंबर ने छू लिया. अंबर. गगन अंबर का चुंबी छक्का अंबर गगन की तरफ. चुंबी ये मैक्सिमम अंबर के बल्ले से लगता हुआ, और जैसे ही वो मैक्सिमम लगा, अंबर ने एक गहरी सांस ली होगी. अच्छे संकेत है ये रेड रेंजर्स के लिए. काफी 11 अरसे से Yeah, थोड़ा 11 for संघर्ष 1. कर रहे थे. आखिरी गेंदबाज की दूसरे ओवर की 11 11 for रन 1 विकेट के after नुकसान पर. 1.5 overs. In spite of that 6, the Red Rangers are scoring at the rate of 6 per over. 1.5 over, 11 for 1. Nitin with the last ball of the second over. Facing him is Amber, who hit a brilliant 6 in the last ball. That has boosted the score to 11. Oh, that's another one. That's It's an high up opportunity, and the opportunity fielder is for the running after fielder. that. And the catch has been dropped. That's a drop. Yes. Oh. Oh, but unfortunately there is a run out. Oh And my Shubham Gade goodness. is out. They were really very hasty. I mean, Unfortunately, It was- Well, if you are a Red Rangers have spectators, you lost don't the need to second watch. wicket. You don't need to keep your eye on what just happened. It's a terrible loss. 12 for 2 after It's 2 lost, overs. but we have a big team. We have more Here super comes players who will be reaching the field soon. The hero So of the let's match. see, Can you afford- Let's see what's Tushar, next. Tushar abhi. Can you afford to lose Tushar, 2 quick Tushar. wickets in 2 overs? And that too, players like Shubham and Amit. Big बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है. Let's see who's next. So Tushar. Tushar is here from Red Rangers. So Amber and Tushar, I think a great partnership to be looking forward for. It seems Loganathan will be bowling to Tushar. That's a interesting duel Thank you, to DJ. watch. और मुझे ऐसा लगता है वो शॉट खेलने के बाद अंबर को मानो यकीन हो गया था कि वो आउट हो चुके हैं, इसीलिए वो दूसरे रन के लिए सोचे भी नहीं थे. और वहीं दूसरी ओर शुभम हाँ. जो कि तत्पर थे, दूसरा रन चुराना चाहते थे,
और इसी कारण ये तालमेल तालमेल नहीं- में कमी देखने मिली है। तालमेल नहीं दिखा। पर ये और काफी वहाँ पे भारी मैं पड़ गया बोलना Red चाहूंगा, Rangers के लिए। रॉयल राइडर्स स्ट्रेटेजी एकदम सही जा रही है, विकेट निकाल रहे हैं वो। Oh, good ball from Loganathan. Nice Single. start from Tushar. देखिए पिछले मुकाबले में राइडर्स की तरफ से लोगों ने मात्र 1 ओवर फेंकी थी, इस मुकाबले में हम उनकी तरफ से 2 ओवर हमें देखने मिल सकता है, और वो भी तब जब अंबर क्रीज पर हो। 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम मुसीबत में फिलहाल नजर आ रही है। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर गतिमान, इनकी पारी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। Logu to Amber. पूरा कैप्टन पे दारोमदार। Oh, and Amber tries to strike him out. और of the LBW ground की and he- जोरदार और ये अपील। आउट। The और umpire लोगों has आते ही- declared him LBW. That's a very Amber important wicket यकीन नहीं for हो रहा Royal है Riders. कि वो आउट करार दिए Red गए। Rangers are in trouble now. 12-13 for the loss of 3 wickets. They are in अक्रॉस real द लाइन trouble. खेलने का नतीजा यही होता है। अक्रॉस द लाइन जब भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है, अंपायर के लिए आसान हो जाता है कंटिन्यूअसली बोल रहे LBW हैं अपील करार देने लोकनाथन में। को बॉलिंग पे लाया जाए, और अब उन लोकनाथन ने संदीप अपना बैनर्जी। करिश्मा दिखा दिया। Sandeep Banerjee. All the best, Sandeep. Break the leg. Sandeep Banerjee has an inspiration that he is coming back to crease now. We have Tushar and Sandeep on the pitch. जिन 2 बल्लेबाजों ने रेड रेंजर्स को पहला मुकाबला जिताया था, अब वो 2 बल्लेबाज ये मुकाबला डगआउट से देखेंगे और अपने आप को कोसेंगे भी। They are giving opportunity for the other team members to show what the team can achieve. तो बिल्कुल ये सब तो थर्ड ओवर में 13 रन पे 3 विकेट जा चुकी है रेड रेंजर्स की। There are still There are still hopes around, yes, but the score we still have like four overs. गति देखिए, वो उछाल देखिए, वो लय देखिए इस गेंदबाज का। बल्लेबाज चारों खाने चित, मानो कुछ समझ ही ना आया हो। 14 for 3. At this average, the projected score is 39, which is way not below at all, the yeah, way expected below the score. expectation. So they will have to step up and score, keep the scoreboard ticking. Red अभी- Rangers in trouble, clearly. देखिए जरूरी नहीं कि Excellent हर bowling मुकाबला and आपके fielding. टॉप ऑर्डर ही जिताएं। एक मुकाबला याद आता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, भारत का स्कोर था 13 रन 4 विकेट के अरे नुकसान बाप पर, रे, और फिर विराट कोहली और केदार जाधव के बीच वो पार्टनरशिप होती है। पुणे में खेला गया मुकाबला और वहां से केदार जाधव की सेंचुरी, विराट कोहली की सेंचुरी और 350 रनों का लक्ष्य पूरा किया था भारत ने। तो इस प्रकार के जब मौके किसी नए खिलाड़ी को मिलते हैं तो खुश हो जाना चाहिए, अपने आप को साबित करने का मौका मिला है। मुझे भी ये नेटवेस्ट ट्रॉफी जो इंग्लैंड में खेली गई थी एंड युवराज एंड मोहम्मद कैफ की जो यादगार बारी थी, ऐतिहासिक पारी जी, बिल्कुल। लोकनाथन जो हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे को लगता है ही डिजर्व्स अ प्लेस इन रणजी ट्रॉफी। टीम इंडिया के लिए भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। एकदम जबरदस्त कंटेस्टेंट है वो, लेकिन पहले बीसीसीआई का जो रूल है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। Oh, big hit. very nice shot at. और एक आउट, Caught बहुत by ही the wicket शानदार keeper. कैच पकड़ लिया है। बहुत ही शानदार कैच। ये रॉयल राइडर्स का एक चीज बोलना पड़ेगा कि एक भी कैच छोड़ते नहीं है वो, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करके आए हैं, लास्ट 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 14 के नुकसान पे 4 विकेट। रेड रेंजर्स अब गहरी खाई में, सीरियस डिफिकल्टी नाउ। It is too early to celebrate, yellow guys. Please. हम कुछ भी बोल ले, कितना भी हम चीयर अप कर ले, Nidhi is still optimistic and she still hoping against hope that the lower order she will feels that till the come to last ball rescue. is bowled, anything is possible, miracle can happen. Puneet, She's the eternal optimist here.
Looking at Punit and Sandeep onto the crease now. Yeah, अच्छा. देखिए क्रिकेट के संदीप- मुकाबले में हाँ. फील्ड पे बहुत बार जरूरी होती है कि अगर कोई गेंदबाज बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा हो, बतौर बल्लेबाज आपको उसे सम्मान देने की जरूरत है, रिस्पेक्ट करने की जरूरत है. जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करने आते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी बल्लेबाज रिस्की शॉट नहीं खेलता है. यू डोंट वांट टू टेक ऑन द सीरियस बॉलर्स, द प्राइम और स्ट्राइक बॉलर्स, और वही गलती किया वहां पर तुषार ने. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लोकनाथन के गति से मात खाए और अपना विकेट गंवाया. Subodh bowling to और ये जबरदस्त अपील, लेकिन एक रन चुरा लिया रेड रेंजर्स ने. ऐसा लगा लेट रियलाइज किया बल्लेबाज ने कि लेग बाय के रूप में एक वो रन भी पूरा कर सकते हैं. संदीप का हर रन गोल्ड में तोलने का. जो हिसाब से ये मैच चल रहा है, मेरे को लगता है है ऑस्ट्रेलिया के सामने, मेरे को लगता है ये बांग्लादेश खेल रहा है. ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश मैच है. every run is important and that's what I think the team is working towards. oh very बहुत ही बढ़िया Wow, शॉट, very good. लेकिन एक ही एक ही रन रन हुआ. से संतुष्ट होना पड़ेगा. 16 के नुकसान पे 4 विकेट. 16 रन 4 विकेट के पुनीत नुकसान का पर. चौथा ओवर beautiful चल रहा beautiful है. hit. फोर्थ ओवर इज इन प्रोग्रेस. Third ball of the 4th over by Subodh to Sandeep. Sandeep cuts it. Oh, The again short one more third man, run they run for attempt. a single here. 17 for the loss of 4 wickets. Red Rangers have an uphill task. They will have to keep the scoreboard ticking. The momentum they have to bring it back, because and not hit only the the occasional 4s and 6s as well if they want to have a respectable score. wickets are down, even the scoring rate is also very low. Punit, They have to one take run, care of both. One more stylish cut. एक एक रन से काम नहीं होगा. We are into the 4th over and only one maximum has been scored, and that too came out of the blade of the skipper. And after that, the boundaries have been dried up completely. इतने प्रेशर में फील्ड में रन करना बहुत ही प्रशंसनीय है. क्या हुआ? और ये Well, they are catching everything coming their और way. ये फिफ्थ विकेट, And पांचवा झटका Sandeep लगता Banerjee is हुआ. out. रेड रेंजर्स को. Sandeep, it's too early for you to leave the pitch. I'm still optimistic. We still have overs and participants are there, so don't get into early Ra- celebrations. Raghavendra in com box is excited now that he wants to go and play. So 5 विकेट के नुकसान पे केवल 18 रन है स्कोरबोर्ड पे. New player coming in is Mitesh Gaikwad in place of Sandeep. Puneet, you can do it. Puneet is being cheered up now. Mitesh and Puneet, all eyes on you, guys. Mitesh on strike to Subodh. The last ball of the 4th over. Subodh is already about to finish off his quota of 2 overs. Wow, and that's बहुत ही a बढ़िया brilliant शॉट, by बहुत ही Mitesh. बढ़िया शॉट. That clears the rope. That शानदार. should be a 6. And the Time. score now is 24 for the loss of 5 wickets. Mitesh has showed his intention very clear. Has hit Subodh out of the ground. Excellent shot. सुबोध ने जाते जाते छक्का खाया है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी नफी तुली बॉलिंग की है. सुबोध इज ऑलरेडी about to finish off his और उस मैक्सिमम Quota of को 2 लगाने overs. के बाद अपने हौसले का परिचय Wow, देते and हुए that's बहुत ही a बढ़िया great शॉट, shot. बहुत ही बढ़िया शॉट. हौसले की शानदार. कोशिश का वो तीर जिंदा रख. हार जाए तो सब कुछ, लेकिन फिर से लड़ने की उम्मीद जिंदा रख, और वो उम्मीद को जिंदा रखा है यहाँ पर मितेश अशोक गायकवाड़ ने. 4 ओवर लोगनाथन 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 4 ओवर 24 पर 5. लोगनाथन ने 2 विकेट लिए, चटकाए, और सुबोध ने 1 विकेट लिया है. 5th ओवर इन प्रोग्रेस. Very good shot. That's a और lovely ये shot by 4. Puneet. That clears the rope. 4 runs.
Good shot by Puneet. 28 now for 5. Now it seems that they have realized that there is no point in roaming around and taking और, singles one or 24 two पर 5 लोगनाथन ने let's 2 be विकेट लिए aggressive. चटकाए जिस किसी ने भी और लंच सुबोध नहीं ने 1 किया है विकेट लिया उनसे है. निवेदन है, आग्रह किया जा रहा है कि लंच के काउंटर Fifth कुछ ही over in क्षणों में बंद progress. कर दिए जाएंगे. प्लीज हैव योर लंच. द लंच काउंटर विल बी क्लोज शॉर्टली. We have only 10 minutes. At 2:30 the lunch counter will be closed. That's a cheeky single by Puneet. Very well run. And it is a very good application of mind as well. After hitting a 6, immediately going to the non-striker end and giving the opportunity to the other also to score runs. Well, if you're wondering what is the fearless cricket is all about, you can watch these two batters bat at the moment. This is what the fearless character is all about. Wow. Wow, They're good not shot. afraid. They're not afraid It's to a play their drop once again. shots. They know that they are playing against a tough opponent, and for their bowler That to was a play catch the which battle got out, dropped. they need some runs on the board. 30 on the board at the moment. How far can they go, gentlemen? I would think 5th over in progress, so I think another 2 overs left. So I think They may 70. just touch 70 would be No, not lit- 70 is little too bit, far. Maybe around 60. between 50 and 60. 50, I think, between yeah. 50 to 60. Yeah, right. That's a good shot by Puneet. They Wow, will good, big clear. run, big run. Okay, okay. नहीं है. He hasn't grounded his Oh, bat. God. Oh, The bat was this in is the very air. casual approach. I think they were batting so nicely. Well, they ran what well, what a but it's a tragedy. schoolboy mistake, one can say. The What a batter Not tragedy. forgot to acceptable. ground This his is not bat, acceptable. and he has thrown his wicket away. Oh, that's very poor judgment. I think Puneet is. Puneet was run looking out. very, very His good. bat was not on the crease. He was doing Well very done, well. well done, Puneet. I think you gave some good scores to the team. Oh, अभी रुपेश. आता आला रुपया. रुपया. क्या बात है, बुलंद आवाज के साथ रेड रेंजर्स के एक समर्थक एक बुलंद आवाज के साथ, इन्हें तो भैया स्पीकर माइक कुछ नहीं चाहिए. रूपेश गुरव has come in to bat. 6 विकेट के नुकसान पे 31. The score is not looking good. Rupesh is known for his bowling than batting. Sir, he has performed on both fronts. There has been many cricket. Wow, that's a Where- nice That's hit. a very good cut. Very nice hit, Rupesh. Bowlers have taken the match to the victory. So let's wait and watch. Well, that shot played by Rukesh Gurau indicates and also tells us that this guy can bat. So what is the score? 32 for 6, 13 deliveries remaining. How much is too much is the big question. Oh, beautiful Big hit. shot. That should clear the rope. 6. और ये 6. Lovely shot by Mitesh. Mitesh, बढ़िया. I think 38 second runs. 6. And now the He question has is, helped to pull up what the- this batsman was doing at the moment, all this time in dugout. Why didn't he come up at the order? He should have been promoted. He has faced only 3 deliveries and scored 13 runs. And the way he's smashing the ball out of the park. See the Excellent, team excellent batting display team by combination is Mitesh such that Gaikwad. he did not get chance also to bat up the order because there are heavyweights So his at the top of the order. you will be like surprised. His stand and deliver. scoring rate is 430 plus. Strike rate. Strike rate is Strike rate is 430. 430. देखिए, जब इस प्रकार की बल्लेबाजी होती है, नॉन स्ट्राइकर का काम आसान हो जाना चाहिए. उन्हें बड़े शॉट खेलने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए. All they want to just tap the ball, give the strike back to him. Back to him. True, Yes. true. Only 2 overs remaining now. 38 on the board. Nikhil And if he Nambiar is the new continues to bowler. bat the way he has been batting, we can see Red Rangers getting to a score of respectability.
So we feel between 50 to, as I said, 50 between 50 to 60, the score looks Yeah. like at this point So in two time. more overs, 12 balls. Nikhil to come with the 6th over. Facing him, Rupesh Gurav. What is Rupesh thinking? Is he thinking Rupesh- of a boundary or a maximum? No, he will be just taking a single and That's a good ball. Completely It's a wide missed ball. it. Well played, Rupya. Well, Rupesh Gurav has got some fans here. Quite popular. I am his biggest fan. Oh, that's a good shot. oh, good shot. I think Should get a single to couple. No, yes. only one. Rupesh has very clear mindset. He doesn't want to, waste even a single delivery. All eyes on the big screen at the moment. This young lad, the tall and lanky guy who bats like Yusuf Pathan. He can Nikhil tonk to the ball Mitesh away. again. wicket. That should be another 6. It's an Another opportunity. Yes! Fantastic. That's his third 6. The score now has God. risen to 46. Excellent batting by Well, the Mitesh. way he is hitting and clearing the rope so easily, one needs to check his bat. Excellent, excellent. Mitesh has given a fresh lease of hope. And it looks as if 70 is reachable now, Shreyas. अब देखिए परेशानी Yeah, का और 86 चिंता for the- का सबब बन चुके हैं विपक्षी टीम अब सोचने पर मजबूर हो चुकी है अब रणनीति बनाने Superb. लगे हैं वो Ugly ball. One more hit. Ah, that's बहुत ही- another 6. Oh, Wow. oh, it just saved at the very boundary. well done probably a saved couple, I 5 think. crucial runs for the team बहुत ही Couple of बढ़िया runs. फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. साकेत का बहुत अच्छा फील्डिंग. शाबाश, शाबाश. the kind of fielding effort can literally Mitesh boost the morale of the team Has 20 Fantastic. runs from 4 balls. His strike rate is 400 with 3 sixes. You can imagine 500 the way he points. has played. and we're expecting for more the way he is batting Yeah. The Rupesh time job and is to practice just take a shows the single and give results. the strike back to. देखिए शुरुआती जो 2 विकेट गए थे कप्तान अर्नब Wow. That's a single, I think. Oh, 2 Oh, runs. two more, two more. 2 more to Rupesh. Good. देखिए 49 शुभम और for 6. अंबर का जब विकेट गिरा था उसके बाद बहुत सारे रेड रेंजर्स के जो समर्थक जो यूट्यूब में मुकाबला देख रहे हैं टीवी पर उन्होंने टीवी बंद कर दिया था और अब टीवी चालू हो चुकी चालू है हो चुके हैं। व्यूज बढ़ चुके हैं और क्रेडिट जाता है इस खिलाड़ी मितेश Oh, अशोक big hit from गायकवाड़ को Rupesh. Very good shot. Very good shot. It's a 4. It's a 4. It's a 4. No, it stopped. Red That's- Rangers already half century done. Great guys, keep it going. Hey. They Have have we crossed got the on the 50 board? mark. Oh, 50, 50, 51 for 50. the loss of 6 wickets. एक स्टेज ऐसा भी था जब 50 काफी मुश्किल लग Difficult रहा लग था, रहे हैं. पर अब 70 मेरे ख्याल से दूर नहीं और है. अभी है. Okay. ये बिल्कुल दिल्ली दूर नजर आ रही थी लेकिन अब नहीं Nikhil with the last ball of the 6th over, and Rupesh just cuts him, but straight in the hands of the fielder. Last 6 balls. 6 ओवर की समाप्ति 13 रन बटोरे इस ओवर में रेड रेंजर्स ने 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर 6 गेंद में 19 रन अगर बन जाए तो क्या ही कहने या सिर्फ एक छक्का और 4 की रिक्वायरमेंट है. बाकी सब एक एक चलेगा. But looking at the batting lineup of Royal Riders, do you feel 70 should be enough? Difficult, but Red Rangers have some good bowlers. Well, 70 is not enough, but if you have seen and noticed one thing, the moment they use the heavy roller, the pitch has changed a bit. The nature of the surface has changed a bit. The wicket is now a bit off-paced. If you're a very smart bowler, if you have got variation, you never know 70 could be a good total. True, true. Right. Even they can get another opportunity to have a heavy roller again. Well, that's why we got to see Umber, the batsman, a quality batsman, likes of Umber. He was struggling to find the ball on bat. So I that think tells the you wicket, yeah, it how- behaves a little I think slowly. the first couple of after overs the, are very crucial. The first 2-3 overs were crucial. Once you set, give momentum, then anything is possible.
Oh yes, anything is possible, and at the moment, it's going to be very Last interesting to over. see how much can they score of these last 6 legitimate deliveries. Coming into bowl is, I think, Nitin, right? Nitin comes in to bowl the last. To Mitesh, he just chips him away for 2 for a single. 52 for the loss of 6 wickets. 5 balls 5 remaining. balls remaining. ये स्कोर कहां तक पहुंचेगी? 60 तो आराम से हो जाना चाहिए. और जैसे कि हमने इस जैसे मुट्ठी- पहले प्रिडिक्शन किया था between 50 to 60. I think 52 is We there came to the and upper 5 band balls now. remaining. Nitin to. Oh, big Oh, hit. that's a good shot. Big hit. It's a That's a four. boundary. Rupia, my darling. This partnership has proven to be really a wonderful partnership for Red Rangers. There is a Both- declaration been given here. Rupesh is the darling of one of our commentary team. Third delivery. Rupesh cuts it. So That should wonderful. get We are seeing how the bowlers can also carry the weight of the batters. Beautiful, beautiful. 57 for the loss of 6 wickets. 3 more deliveries to go. Will they cross 60, We 65? should- I think we should easily cross. Three We more should deli- cross 60. Well, one thing 60 is for sure, but I think one thing, one they thing is target for sure. 65. If Sanket bowls Yeah. a fuller length delivery, Sumit will smash him. Oh, that's a dot ball. That's a wide. So another opportunity, I think. Anything that will come in his arc, Okay. in Mitesh arc, the ball's gonna go out of the park. That is for sure. What is he gonna bowl? Is he gonna hit the good length area? Oh yes, he is. Oh, he tries hitting him, misses the Bangs line. the ball into the surface, and once again, ball came a bit late. That is a nice ball. Only 2 balls remaining now. This is 58 where you gotta be very 58 to the clever loss of at 6. being a bowler. 58 runs, 6 wickets. Last 2 balls remaining. Okay. Big shot coming off this delivery. Wow, that's a good shot. Not They'll at go in all. for a single. Single. Every. Oh, that's a bit of a overthrow. No. It's I only think a the, single. the bowler was testing the 59. wicket-keeper's skill. 59 is on the board. Last delivery to be bowled. And Rupesh on strike. 59 is the score. What a fantastic final over this has been so far. Only 8 runs came off it. In spite of that wide. Only a boundary has been scored off this over, and Rupesh Will Gurov Rupesh go in for the big one now. Let's will have see. to. That's a single. Oh, wanted to run out the batsman at the non-striker's end with Mankad. We'll have to wait for the umpire's call there. Nothing from him. Buys probably. Oh, they have given the It's a run. wide. It's a wide. Or no ball. Umpires. This is the last delivery. Wow, beautifully hit by wonderful. Mitesh. तो दूसरा रन भी ले लिया है. ठीक है. Okay, ठीक है. And that is 8. 62 for the loss of 6 wickets. I think Red Rangers pulled it very well. well. Well, Royal they fought Riders back. have to score 63 runs 63. to win for Royal Riders. Great job done, guys.
Hello, check. Hello, check. That Members, was it's a the request. आ previous जाओ ना one. आगे एक गेम के लिए. Come on, for one The game. unbroken partnership continues in वहाँ this match पे- as well. वहाँ पे gossip चल रहा है. Some important gossip. Toss team. Yes, after the toss, we'll start with some activity. So I request at least 8 to 10 members to come ahead. Well, there was a high full toss delivery, came at very comfortable height of the batsman Arun. He was looking to play it over cover, but the ball hits the sticker
off the bat and straight away they take a single and gets off the mark. Arun Pujari, Vaibhav, both the batsmen, they are destructive in their approach. And Red Rangers, they need to get rid of one of these that's two a good batters, shot by but at the Vaibhav. moment, Crossing it's the road. Vaibhav. That's the first Greeted the boundary. bowler, Tushar, full toss delivery. No fielder there protecting the boundary on the onside. And Vaibhav is off the mark in style. Paging for cameraman, video shooter and cameraman for the toss. For the toss. Big hit. That's Well a big fielded. hit. Well fielded. 7 for no loss, Royal Riders. हर प्ले स्पोर्ट्स में अरुण का ये एज घट जाता है, प्रॉब्लम है. Tushar with the 5th ball. First over played on well on the onside. They will amble across for a singles. 8 for no loss. Come on, the captains. All right, then it's toss time, which could be the final league match from the men's category. It's about to happen. On my right, I have got Gitesh leading. Gitesh on my left now, leading Extreme, and Ravi from Blue Warriors. And as always, Jyoti ma'am is with us. She'll flip the coin one final time in the league match. Who will call? Gitesh is going to be calling. Tells is the call and tells it is. Gitesh, very important game. Do or die game. Winning the toss and you have decided to. एक्चुअल में हमने अब टीम कॉल लिया, इसमें डिसाइड हुआ कि ये क्रुशियल मैच है, तो इसके लिए हमने वो डिसाइड किया कि Come on, bowling first तुषार. करेंगे. Tushar with the last ball of his first over. इस मुकाबले पे बहुत कुछ Oh, निर्भर that's करेगा और निर्भर करेगा Swung नेट very रन रेट well. पर That भी. will clear the तो boundary. I आखिरी think ओवर that's पर a boundary. आखिरी ओवर तक डटे रहने 12 की for no जरूरत है. loss. The end of क्या the first किस प्रकार over. अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं Royal इस Riders प्रेशर are bigger मुकाबले well. से पहले? हम अभी बॉल कर रहे हैं फर्स्ट, तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि कम से कम स्कोर में ब्लू वायरस को रोके. तो चलिए अब टॉस आने के बाद रवि, what went wrong in the first match? You started off well, you were looking in a fine touch, but something did not click. Bowling did not click, so we want to correct that. I'm sure we'll find the right line and length now in this match. And batting was fine. Batting, we actually were 4 overs 44 runs. It was quite good run rate when we started with. We kept losing wickets. That was one part of it, and we didn't score much what we would have expected to score. So then the bowling didn't strike. So we hope that this match will be back. Well, final league match, quality team against you, do or die match. Any changes in the playing 11? Any changes in the strategies going ahead in this match? No change in strategy. Actually, we also wanted to bowl first in this match. Amber comes to ball. being a crucial match, as what Gitesh mentioned. So no change in playing. In the hunt 11, of the same playing wickets 11. now. All the very best, gentlemen. All yours, please shake hands before you go off. All right then, toss done for the final league match, and the news from the Wow. center is Team Extreme winning the toss and they are bowling first. Well, Riders dugout, they are celebrating, they are elated, jumping in joy, and why not? Their openers are doing what they are known for, dealing in boundaries, scoring It was a runs four. freely, and they are after the bowlers.
Well, in their previous encounter, Royal Riders, Arun Pujari was the aggressor. He was finding the timing right. He was finding the gap easily. But in this inning, the things have changed. Vaibhav is the one who is doing the bulk of scoring at the moment. 17 without losing a wicket. We are still into the second over of the back Come on, foot all the goes HRs, of the HRs, offside, it's a and request no to please stopping come that. here. It's a Sare boundary HRs. again. Vaibhav. And his last name starts with S. I don't know, does it stand for Suryavanshi or not? But he is batting like Vaibhav Suryavanshi. The approach is pretty much same. They have begun very well. 21 for no loss. Well, the captain of Red Rangers under immense pressure. 9 runs already off his bowling. 3 balls yet to be bowled to complete this over. Banged in short. But this time he gets an extra pace there. Probably the reason the batsman got beaten there. 21 without losing a wicket. Vaibhav 13 off just 5 deliveries. And they require 42 off 32. Well, this is pretty much on. Still, Red Rangers, I beg your pardon. Yes, Red Rangers, they don't need to put their shoulder down. Still, Yes, we need couple of wickets. Game will be in our hand. Oh, Wow. that's a good wonderful shot. shot opportunity. And he's out. And Vaibhav goes. Brilliantly Puneet, caught by Puneet. Puneet. Puneet caught Amber That's ball. the first wicket for Red Rangers. So A much needed breakthrough provided by the captain himself, Amber. He gets rid of the batsman, the dangerous looking batsman Vaibhav. Goes back to pavilion after scoring a quick fire, 13 of the 6. We are done with 2 overs. I reckon 1 ball yet to be bowled. Here comes Anand, the deadly destroyer. Definitely a strong batting line for Royal Riders. But I think Red Rangers are playing tight. The bowlers are all ready to take more and more wickets down. that was a good catch by Puneet. Amber to Anand. Oh, Yeah! that's a good shot by Anand. Just cut it down to short third man. They go in for a single. So at the end of 2 overs, Royal Riders are 22 for the loss of Vaibhav's wicket. Well, 22 for Rangers, 1. I Bison think they had lost more wickets, I think. Yeah, we had lost more wickets around that. More number of wickets, yeah. Score was quite low. The score was only 13 for Red Rangers. So in I think remaining 5 overs they need 40 runs. Yeah, iska inka hai. Men. In 5 overs 41 runs required by Royals, which seems to be very easy considering the fact that only 1 wicket has been lost and both the batters are really in command. They are controlling the game right now. They are in the driver's seat. Well, this is the one thing Yeah. where the bowler have to be very smart. You just cannot afford to bowl those extra deliveries, extra runs. You don't have much in your kitty to spend much. See, 40 more to chase of just 30 deliveries. Required rate is pretty much under control. Only 8 in the over. you saw? 8 in an over rather. That's why he doesn't get out, run out. That is the technique, you know, you should always have. So as has been observed by my co-commentator, Arun is really good in running between the wickets. He is half the pitch down once the ball is released.
और ये कैच हो सकता था, लेकिन ड्रॉप. Well, this could be the difference between two teams. Yes, we agree. Fielding. Royal Challengers never dropped a single catch, whereas Red Rangers are dropping some crucial catches, and as we say, catches win matches. If you drop catch, you drop the match. Royals are scoring at the rate of almost 11 runs per over. Well, some football skills on display there by the fielders at deep square leg. But not before he could stop the batsman to take two. So scorers, what is the score after? Oh, what a shot! It's a good shot, but straight to the fielder. देखिए विकेट लेने की जरूरत है यहाँ पर, लगातार अंतराल पे विकेट्स लेने होंगे, झटके देने होंगे विपक्षी टीम को. यही एक आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है कि आप इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं और अपना पंजा कर सकते हैं. सभी फील्डर बाउंड्री लाइन के नजदीक है. बहुत ही बढ़िया शॉट है ये. ऑफ साइड में बैकफुट पे जाके इंतजार किया, गेंद का आने दिया अपने तक और खेला डीप कवर के खिलाड़ी के हाथ में. और विकेट्स अगर नहीं मिलेंगे तो मुसीबत में आ सकती है रेड रेंजर्स. ये जो अभी यहाँ से कपल ऑफ ओवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल. इट विल डिसाइड द मैच. बहुत ही बढ़िया शॉट और ये 4 रन. गुड एफर्ट अंबर. दोनों फील्डर के बीच में से बाइसेक्ट करके चौका निकाला है. $33 for 1. 30 runs required in 24 balls. 4 overs, 30 runs required to win the match for Royals. यहां से जीत आसान तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है रेड रेंजर्स के लिए, कि कहते भी है ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या. ठान लिया तो ठान लिया. अगर आपने ठान लिया है यहां से आप लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं, तो बिल्कुल विजयी भी हो सकते हैं. मत भूलिए 2024 का विश्व कप का वो फाइनल भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका, 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे और साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट उस मुकाबले को डोमिनेट कर रहा था. और फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, क्लासन का विकेट झटकते हैं और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बनकर रह गया. तो आपको जब इंस्पिरेशन ढूंढनी होती है, मोटिवेट अपने आप को करना है, तो आपको बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है. इसीलिए कहते हैं क्रिकेट गेम एक अनिश्चितताओं का खेल है. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है. टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड एंड टिल द एक्चुअल विन इज टेकिंग प्लेस. नो. The batsman will easily stroll for a couple of runs. Red Rangers have to field very well, and they do not have the liberty of missing any catches. 26 needed of 20 deliveries. 26 of 20. The difference between this and Red Rangers innings was Red Rangers had lost a lot of wickets. That's the major difference. And also the quality of bowling attack, sir. Yeah. that The is true. area that they decided to bowl, it's for pretty much on length, good length. They were hitting the deck hard, wearing their pace, wearing their length. Various, when you see, They were not giving that comfort to the batters to free their arms. I don't think Red Rangers have tested the batters yet in this inning. True. 2 बॉल बाकी है. 28 रन चाहिए, 20 बॉल. 26. 26. उसमें भी बहुत क्राउड होता है ना. गेट भी लगता है. 5 बजे में ट्रेन के छक्के मामा के गेट लगाते हैं मेट्रो वाले. बट मेट्रो का फ्रीक्वेंसी भी तो ज्यादा है. क्राउड का फ्रीक्वेंसी भी लगता है ये ना.
से देखा रहेगा अंधेरी। मैंने भी नहीं देखा था अंधेरी। हाँ स्टॉक मार्केट वो मेरा मंडे टू फ्राइडे रहता है। There is some discussion Some going discussion, yeah, right. on in the right. middle of the pitch. Some people know ऐसे like मैं ऑफिस आवर्स में What is the discussion? ऑफिस आई थी भागने I के लिए, think, झूठ भागा था, मेरा पेट दुख रहा निकली मैं Can we check with the umpires? सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। I think What is the discussion going on? नहीं पता है ऐसे कलीग्स वगैरह को पता है वैसे मैं बता हाँ वही मुझे एकदम ही क्लोज है ठीक है Well, some correction that needed to Europe be done. I reckon it's being sorted. One delivery remaining of this over. 1 or 2? 19 so there's one more deliveries ball and which 26 is, to score. remaining for Umber to bowl. 19 deliveries remaining, 26 runs to score. Umber to bowl the last delivery of the fourth over. On strike is Arun Pujari. They get a single at the end of 4 overs, 38 for the loss of 1. आत्मविश्वास साफ झलकता हुआ यहाँ पर अरुण पुजारी की बल्लेबाजी और अनंत की बल्लेबाजी के जरिए 4 ओवर का खेल पूरा। रॉयल राइडर्स 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन चाहिए 18 गेंदों में जीत के लिए। अभी भी ये मुकाबला थमा हुआ है। जी हाँ, पलड़ा भारी जरूर है रॉयल राइडर्स का, लेकिन रेड रेंजर्स को कम ना किए। और मेरे ख्याल से ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। पिछले मुकाबले में अपने बल्लेबाजी से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था शुभम ने। इस मुकाबले में अपने गेंदबाजी से लोगों का दिल जीतने के लिए आए हैं शुभम गड़े। उसका सामना करेंगे अरुण पुजारी। और ये बढ़िया शॉट, सिंगल ले लिया है। अगर पहले ही अटेम्प्ट में इस गेंद को फील्ड कर लेते तो यकीनन एक टाइट कॉल हो सकता था नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर, लेकिन बहरहाल दोनों ही बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित और एक रन भी पूरा कर लिया है। Oh, that's a ये good बढ़िया ball. गेंद है। ये वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो गलती तुषार ने किया था जब लोगों आए थे गेंदबाजी करने के लिए। कई बार जैसे कि हमने कहा कि गेंद की मेरिट पे अगर बल्लेबाजी कर रहे तो बेहतर विकल्प होता है बल्लेबाजों के लिए, ना कि आप गेंदबाज को जो सम्मान चाहिए रहता है दे देना चाहिए। Oh, ये देखिए, इंतजार कीजिए आप खराब गेंद का। इंतजार का फल मीठा होता है, इंतजार का फल 4 होता है। उन्होंने गेंद देखा कि बेहतरीन- मौका था, दस्तूर भी था, मौके पे चौका लगा दिया है। और उन्होंने अनंत ने yes taken it on his shoulder and struck a beautiful 4 that इसलिए brings कहते हैं- the required runs below 20 it's 15 balls. 15 बॉल 20 रन। That's another shot. और ये अनदर एक चौका। Chakka. That's a 6. 6। So 14 runs required in 14 balls. ये एक चौका और एक छक्के की बदौलत अनंत ने अपना इरादा क्लियर कर दिया है कि ही मींस बिजनेस। थैंक यू डीजे। और कहते हैं ना, बेहतर से बेहतर की तलाश कर और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। बाउंड्री मिली थी, बाउंड्री से खुश नहीं थे, सिक्सर से यहां पर आनंद उठाते हुए दर्शक He wants to और finish जीत off की the ओर game. बढ़ते हुए। He wants to finish off the game as early as possible. बड़ी उम्मीद से गेंदबाजी के लिए That brings up the 50 गेंदबाजी of के the लिए बुलाया innings. था यहां पर। इसी के साथ 50 रन पूरे रॉयल्स राइडर्स के। 13 बॉल 13 रन 13 balls 13 runs। रॉयल राइडर्स के लिए अब सफलता काफी नजदीक लग रही है। और ये बहुत ही डेलिकेटली
और बहुत ही समझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं अरुण पुजारी। उन्हें पता है कि रिस्क नहीं लेना है। अभी तो गेम बहुत बाकी है, अभी गेम बहुत बाकी है। अब 12 गेंद में 12 रन चाहिए। देखिए, जब रॉयल राइडर्स को मैं देखता हूं ना खेलते हुए, तो मुझे एक 2019 में बहुत ही मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर और एनालिस्ट भी है इंग्लैंड के, नासिर हुसैन साहब। बहुत ही रेप्यूटेड क्रिकेटर थे एक समय पे। उनका एक शब्द याद आता है 2019 में, जिस प्रकार का कैंपेन रहा था भारत का। 2019 में अनबीटेबल टीम नजर आ रही थी लीग मैचेस में, और वो अनबीटेन थे भी फाइनल तक। और उन्होंने एक स्पष्ट कर दिया था कि जो भी टीम भारत को हराएगा वो विश्व विजेता होगा। और मुझे ऐसा लगता है जो भी टीम रॉयल राइडर्स को हराएगा इस टूर्नामेंट में, वही फाइनलिस्ट, वही चैंपियन, वही विनर बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रेड रेंजर्स ही वही निकल के आने वाला है जो येलो राइडर्स को हरा के और विश्व विजेता बनेगा। उम्मीद पे, जैसे बताते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वैसे निधि उम्मीद लगाए रखी है। जीते को तिनके का सहारा साहब। वेरी वेल बॉल्ड रुपेश। इट्स अ वाइड। वाइड के अंदर और एक रन मिला बाई का, तो 2 रन मिल गए। रुपेश गुराव बॉल पे 10 रन 12 बॉल में। देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है रेड रेंजर्स ने, इन्होंने तैयारी की थी अरुण पुजारी और वैभव के लिए, लेकिन अनंत आउट ऑफ सिलेबस आ गए। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो कोई दबाव में है। आसान सा रन चुरा लेते हैं ये लोग। मेरे को लगता है ये ट्रेनिंग इसमें भी ली है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए भी ट्रेनिंग की है। Opportunity that's gone miles up in the air, and Tushan doesn't drop many. Finally a wicket, finally something to celebrate for. बहुत ही बढ़िया। क्या ब्यूटीफुल रुपया। रुपया ने किया कमाल, बेस्ट शॉट। लिया अरुण की विकेट। तो चलिए, इस विकेट के साथ एक उम्मीद सी जग चुकी है रेड रेंजर्स के लिए, और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कुशल। 9 रन चाहिए 10 गेंद में। तो कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल कोशिश करते करते। हारा तो वो है जिसने कभी कोशिश ही ना की हो। तो कोशिश तो कर रहे हैं यहां पर रेड रेंजर्स भरपूर। रेड रेंजर्स को सिर्फ डॉट बॉल देनी है वाह। एंड द मैच इज आवर्स। कितनी आसानी से 4 रन बटोर लिए, ये देखिए। मानो कुशल अपने बल्लेबाज पुजारी जी को कह रहे हो, भाई साहब बड़ा शॉट क्यों खेलना है, जब आसानी से गेंद को टहलाकर गैप ढूंढकर 4 रन बटोर सकते हैं आप। कई बार बल से ज्यादा अकल से काम लेनी चाहिए। बल से गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंकना चाहते थे पुजारी जी, लेकिन अकल से 4 रन बटोरा है कुशल ने। और एक बार फिर ऑफ साइड में खेल दिया, बढ़िया क्षेत्ररक्षण। 4 रन, 4 कदम की दूरी कब होगी पूरी, अब यही एक सवाल है। 8 गेंदों में 4 रनों की दरकार। 8 गेंद 4 रनों की जरूरत है। रेड रेंजर्स सिर्फ डॉट बॉल जाना है बस। दैट्स दी विनिंग शॉट। बस 8 बॉल डॉट बॉल कर दीजिए।
Chopped on. और रुपया ने ये किया गेम वापस समाप्ति। कमाल। रॉयल राइडर्स रुपया रुपया रुपया। रुपेश ने कमाल कर दिया। एक जबरदस्त विनर बैट्समैन डाउन। देखिए कभी ना हारने का जो जज्बा, जो जुनून होता है, उसका उदाहरण पेश कर रहे हैं यहाँ पर रुपेश। ये रुपेश का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने वाले हमारे कमेंटेटर राघवेंद्र है। डार्लिंग करके रुपेश का माइंड ब्रेन वॉश कर दिया उन्होंने। इसलिए विकेट भी मिला। अगर आप नहीं बोलते तो बहुत अच्छी बॉलिंग होती। और इस स्टेटमेंट के बाद राघवेंद्र जी से सबसे ज्यादा कोई खफा है तो वो रुपेश जी की प्रेमिका। चलिए अभी रन रेट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाम आएगा। 2 मैचेस के बाद रॉयल राइडर्स 4 पॉइंट के साथ में टॉप पे हैं और दूसरे स्थान पे है रेड रेंजर्स। अरे जल्दी जल्दी, अरे इस 2 रन के साथ अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 61 रन बने, 3 विकेट के नुकसान पर 2 रनों की जरूरत 6 2 गेंदों रन में। की दरकार। मैचेस तो लास्ट बॉल पे भी चेंज हुए, अभी तो 2 रन बाकी है। जब तक 1 रन भी बाकी है तब तक उम्मीद कायम है। आखिरी रन, आखिरी बॉल कैन चेंज द गेम। ये सॉन्ग लगाया है हम सब के लिए। सॉन्ग कौन लगाता है? ऐसे सॉन्ग कौन लगाता है? फिश को ये सॉन्ग हमें याद दिला रहा है कि अर्ली सेलिब्रेशंस मत कीजिए। 1 बॉल 1 रन कुछ भी कर सकता है। आखिरी ओवर के लिए एक रुपेश को दूसरे रुपेश ने रिप्लेस किया है। 2 रन चाहिए। अगर एक ही बॉल में 2 विकेट गिर जाएं तो भी ये मुश्किल लगता है रेड रेंजर्स के लिए। और ये 1 रन तो ले लिया है। स्कोर्स लेवल पे आ गए हैं। 1 ही रन चाहिए 5 गेंदों में। रॉयल राइडर्स की कैंप बहुत ही एक्साइटेड दिख रही है और जरूर होनी भी चाहिए। फ्लैग्स लेके तैयार खड़ी है पिच पे जाने के लिए। और ये विनिंग शॉट सर, लेकिन आपने रुपेश को जो बोला तब से लेके रुपेश का मोमेंटम बिगड़ गया। कोई मैच बचे है ना? What a win, Royal Riders! Amazing! It's a request to please celebrate your victory outside the pitch. रॉयल राइडर्स बहुत ही अमेजिंग खेले आपने, बट अभी प्लीज सेलिब्रेट योर विन आउटसाइड द पिच. वी रिक्वेस्ट ब्लू वॉरियर्स एंड टीम एक्सट्रीम
It's your next match. Come on the field, everyone.